अब बायोसेंसर के बारे में और डीपली स्टडी करने वाला है। इससे पहले एक और वीडियो है, उसमें हमने शॉर्ट नोट्स देखे हैं, सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ बायोसेंसर इन द। इस नोट हम ट्राई करें कुछ और बायोसेंसर के पॉइंट्स, हाउ दिस मतलब कैसे काम करता है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा देखें। जनरली the most general definition of biosensor is in simple words we can say a device that uses a specific biochemical reaction mediated by isolated enzymes, immunosystem, tissues, organelles, or whole cell to detect chemical compounds, electrical thermal usually by electrical thermal or optical signal. Is a in a simple word that it is a device that use a specific biochemical reaction which mediated by some biological molecule entities which usually chemical compound detect chemical compounds by electrical, thermal, or optical signal. There is the biosensor operator diagram. Here the input and either the mediated recognition elements is a sample. Here is the input and our जो डिटेक्टर जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं वो भी इस सैंपल में मौजूद है, प्रेजेंट है. एंड द inputs our device got here inputs, and here will be the process, and the signal detect signal, and the signal will be amplifier and then output. Here amplifier and output we can say is a user interface, and this part is transducer, and this part middle part is interface, and your left side is recognition element. Here recognition elements are some antibodies, nucleic acid should be it could be nucleic acid, enzymes, molecular proteins, cells, lectin receptors, imprints. These are the this they are these are the this can be recognition element for our device. And here the interface, in the interface here our जो ट्रांसड्यूसर एंड द जो रिकॉग्निशन एलिमेंट उनके बीच में यहाँ पर इंट्रैक्शन होता है. जो इनपुट होता है वो एंड जो रिकॉग्निशन एलिमेंट्स होता है वो डिटेक्ट करता है जो हमारा डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करना है. एंड देन ये इंटरफेस के द्वारा जो ये रिकॉग्निशन एलिमेंट्स होता है ये बायोकेमिकल सिग्नल ऑब्टेन करके इसको फिर ये जो ट्रांसड्यूसर होता है ये कन्वर्ट करता है बायोकेमिकल सिग्नल को सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में. फिर जो ये जो सिग्नल होता है वो काफ़ी कम एम्पलीट्यूड का होता है, तो इसे फिर एम्पलीफाई किया जाता है. देन आउटपुट वी विल गेट आउटपुट. द ट्रांसड्यूसर could be stochastic, piezoelectric, electrical, electromechanical, optical, thermal, and mechanical. These are the types. The signal can be obtained by the transducer. These are the types can be obtained. Signal can be obtained by transducer. This is the simple flow diagram for the biosensor. Next, go second slide. The uniqueness of biosensor operation is defined by the way the analyte and bioreceptor are allowed to interact in biosensor. The uniqueness means the biosensor के जो operating है biosensor एक बार मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बायोसेंसर में यूनिकनेस यही होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं एनालाइट एंड द बायोरिसेप्टर इन दोनों के बीच में जो जिस टाइप की बॉन्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ये उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो यूनिकनेस होगा. बायोसेंसर हर एक बायोसेंसर के लिए यूनिक इंट्रैक्शन होगा. एनालाइट एंड बायोरिसेप्टर के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो यूनिक होगा. In many cases, this combination enable the detection of analyte without using reagent. In many cases, this combination enable the detection of analyte without reagent. बिना किसी reagent के हम इस analytes को detect कर सकते हैं इन दोनों bioreceptor and analyte के combination के थ्रू.
एग्जाम्पल ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन, इसका जो एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन ब्लड सैंपल्स कैन बी measured directly by biosensor that was made specifically for glucose measurement by simply dipping the sensor in sample. The glucose concentration measurement device is the example of this detection of without reagent. Here we are detects concentration of glucose, measure the concentration of glucose without using any reagent by simply dipping the sensor in sample. सैंपल में सिंपली डिप करके हम जो ग्लूकोज के कंसनट्रेशन होगा उसको फाइंड कर सकते हैं. इन नॉर्मल प्रोसेस मेनी सैंपल प्रिपरेशन स्टेप्स रिक्वायर एंड ईच स्टेप रिक्वायर रिएजेंट टू ट्रीट द सैंपल. इन नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि हमें अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन फाइंड करना है तो उसमें मेनी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. सैंपल प्रिपरेशन, फिर सैंपल प्रिपरेशन के जो बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और इन सारे स्टेप में हमें रिएजेंट रिक्वायर्ड होते हैं जिसके द्वारा रिएजेंट के थ्रू हम ट्रीट करते हैं सैंपल को फॉर द डिटेक्शन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. द मेन एडवांटेज ऑफ बायोसेंसर्स इट इज सिंप्लिसिटी बिकॉज दिस इज स्मॉल इन साइज एंड द सिंप्लिसिटी यूज ऑफ सिंप्लिसिटी भी बहुत ही सिंपली तरीके से यूज कर सकते हैं. स्पीड ऑफ मेजरमेंट दैट रिक्वायर नो स्पेशलाइजेशन लेबोरेटरी स्किल. जो इसको जो मेजरमेंट है उसको स्पीड बहुत काफ़ी जल्दी स्पीड रिजल्ट हमें डिटेक्ट करके देता है. इसके लिए कोई लेबोरेटरी स्किल्स की ज़रूरत नहीं, स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी स्किल की ज़रूरत नहीं होता. इट्स रिक्वायर लेस सैम्पल एंड रिएजेंट. ऑल्सो दिस इज द स्मॉल इन साइज, so it's requires less sample and reagent, and in some cases they don't require any reagent. And the combination of high specific biological reaction with appropriate transduction element provide biosensor with other advantage. अगर combination of high specific biological reaction, जो specific हाई स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन विद अप्रोप्रिएट ट्रांसड्यूसर, और जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन के साथ अप्रोप्रिएट ट्रांसड्यूसर एलिमेंट को अगर हम लोग आपस में इंटीग्रेट करते हैं तो उससे हमें बहुत और कुछ एडवांटेज होते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन का. जैसे कि हाई सेंसिटिविटी जो कि काफ़ी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एंड जो ट्रांसडक्शन है वो भी एलिमेंट्स काफ़ी स्पेसिफिक है, तो इसका जो सेंसिटिविटी होगा काफ़ी हाई होगा यानी स्पेसिफिसिटी एंड काफ़ी स्पेसिफिक होगा, किसी एक के लिए स्पेसिफिक होगा, नॉट जनरल. शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम, बहुत कम टाइम में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा. एंड रीड टाइम मॉनिटरिंग मेजरमेंट कैपेबिलिटी. रीड टाइम मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग मेजरमेंट है, तुरंत हम लोग याद है. देयर इज द बायोसेंसर. हियर वी कैन सी द हाउ हियर द बफर सैंपल solution and the target antigen. This is the target antigen and this is the biorecognition element, and the substance here is the substrate and the sensor signal. These are the sensor signal. When these antigen bind with bioreceptor, combined with biorecognition element, then this substrate will generate sensor signals. The substrate send sensor signal. Here the interface will be the transducer and the जो भी ये रिसेप्टर इनके बीच में ये फिर सिग्नल जनरेट करेगा. इसके डिटेक्शन के बाद this is the diagram of biosensor. Here we can also see the bioreceptor biotransducer interaction. Bioreceptor, this is the bioreceptor, this is the analyte, and here is the interaction between the analyte and the receptor, and here is the interaction between the receptor and transducer, and the detector chip. जिसका डिटेक्टर चिप, ये जो चिप है फिर ये सिग्नल जनरेट करेगा, transduce signals. So this is the simple diagram of biosensor.